ये करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या two pendulums have time periods t and 5t/4? They start SHM at the same time from the mean position. After how many oscillations of the क्या दो pendulums, पहले का टाइम पीरियड t है, दूसरे का 5t/4 है, टाइम पीरियड दिए। They start SHM at the same time from the mean position. Okay, mean position, same time. Fine. After how many oscillations of the smaller pendulum, they will meet again in the same phase. In the same phase, that's important. उनका phase same हो जाएगा basically, इतना ही है ना। And they have to meet again और phase भी same होगा. That's weird, right? Yeah. और okay, let's think about it. So तुमको time period दिया हुआ है. Let's think about the first one. तो पहले का क्या amplitude same है? नहीं, amplitude के बारे में कुछ पता नहीं है अपने को. ये तो सही नहीं हुआ. Same, okay, time period दिया है, same at the same time and mean position. एम्पलीट्यूड के बारे में को बताया नहीं है, सो हाँ ठीक है। आई गेस उनका जो फेज है वो सेम होना चाहिए एंड इट मस्ट बी जीरो। आई गेस दैट्स द थिंग, राइट? जीरो फिर 2 पाई जो भी है। सो या हाउ मेनी ऑसिलेशंस, राइट? ओके, ऑफ द स्मॉलर पेंडुलम। स्मॉलर, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉलर ओके, पेंडुलम्स लाइक दैट। सो यू नो इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल वगैरह ऐसे रहता है ना टाइम पीरियड। सो जो छोटा पेंडुलम रहेगा उसका टाइम पीरियड बड़ा रहेगा, दैट इज या आई गेस दैट्स द थिंग। जो छोटा है इसका बड़ा है, मतलब कि 5t/4 है, राइट? ओके, सो व्हेन दे वन, राइट, तो एम्पलीट्यूड इन फैक्ट वी स्टिल डोंट नो। चल ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। छोटे का 5t/4 है, देखते हैं क्या 5 ऑसिलेशन हो जाएगा। लाइक ओके, 5 टाइम्स 5t/4, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 25t/4 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 5t हो जाएगा। सो इसने 5 ऑसिलेशन किए हैं, 25t/4 यानी कि यू नो राइट। तो इसके 5 ऑसिलेशन का, इसको 25 से लाइक 5t' बोल दो, तो इसके कितने हुए इतने ऑसिलेशन, यानी कि 25t/4 टाइम होगा अभी, राइट? सो इसके कितने हो गए 25/4 ऑसिलेशन आई गेस। और इसके 5 ऑसिलेशन हुए, तो फिर ये मीट कैसे कर सकता है? क्योंकि ये ओरिजिन पे रहेगा, तो थीटा इक्वल टू 0 पे रहेगा, ये नहीं रहेगा। दैट डजंट मेक एनी सेंस। 4 या आई गेस। सो छोटे पेंडुलम के लाइक 4 ऑसिलेशन हो चुके हैं और दूसरे पेंडुलम कितना टाइम हुआ अभी? अभी टाइम हो जाएगा 5t। सो दूसरे के 5 हुए। आई गेस दैट इज अ गुड थिंग। सो बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सेम फेज, क्योंकि यू नो एक का इसका 5 है अनफॉर्चुनेटली। ओके, दैट्स नॉट गुड। वेट, 5t, 5 times 2 and 5 times 2 pi, 10 pi. Yeah, okay, same phase actually. So that's fine. Second question. A pipe of length 2 meter is open at both ends. The speed of sound is this thing. The air column can resonate in frequency. What? Okay, pipe of length 2 meter is open at both ends. The speed of sound is given. The air column can resonate in frequency. ठीक है ना, वही बोलना अपने को लेंथ दी है, स्पीड ऑफ साउंड बताया है, फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, राइट? लैम्डा क्या होगा? लैम्डा कैन बी, सो दोनों एंड पे खुला हुआ है और या ओके, दिस लेंथ मस्ट बी लैम्डा अपॉन 2 एंड इन दैट केस, राइट? सो या, सो लैम्डा अपॉन 2, राइट, दैट्स इक्वल टू 2 आई गेस। ओके, तो अलग अलग टाइप, फाइन फाइन फाइन, लाइक n lambda upon 2, that's yeah, n lambda upon 2 is equal to 2 meters. Lambda is just equal to 4 upon n, which means that frequency is c upon lambda, यानी कि 340 upon 4 and that times of n, यानी कि क्या ये हो जाएगा 170 upon 2, which is 16 के लिए 8 and you got 10, which is 85 n. So क्या क्या हो सकता है ये? इसका 2 times यानी कि 170, which is over here. Okay, actually नहीं, but whatever. और इसका 3 times क्या हो जाएगा? So 3 times, so that's like 24 and then you got 15, which is 255. That's there. So A is the answer. Next question, third. Third is two particles of equal mass m at A and B are connected by a rigid light rod AB lying on the horizontal smooth table. Okay, an impulse J is applied at A in the plane of the table and perpendicular to AB. दो पार्टिकल्स है A and B, उनको तुमने एक रॉड से अटैच किया है. Impulse J at A, perpendicular to AB, of course. Then the velocity of particle just after the impulse at A is, right? So of course,
why would they have this tension? नहीं, वो नहीं रहने वाला because rod is inextensible. So velocity is just J upon M, right? Yeah. Third का answer B. What's the big deal, huh? Of course, that's not a big thing. ये zero रहेगा, it's gonna be J upon M. ये हो जाएगा J upon M upon 2. That's this velocity. So angular velocity still same हो गई and whatever. You really want me to do the whole thing? Nah. Next question, fourth. Fourth is in an SHM. X is equal to a sine of omega t. Okay. In an SHM, x is equal to a sine of omega t. The minimum time taken by the particle to reach from x is equal to ye cheese to ye cheese is 0.5 seconds. What is the minimum time? Wait, I think last question may something went wrong. Oh yeah, okay. So the thing is कि अगर ये सिर्फ एक string होती, then it would have done tension like this. But यहाँ पे ये ऐसा force भी ला सकता है. So it's not so easy as that. ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं? We'll just call this thing as R and whatever, right? This is impulse J. So J times R upon inertia is just 2mr squared about the center of mass, of course. That's our angular acceleration. So this times R यानी कि ये चीज. So J upon 2m is as seen by the center of mass for both of these guys. राइट और सेंटर ऑफ मास खुद J अपॉन 2m से जा रहा है ऊपर. सो अकॉर्डिंग टू दैट या लाइक उसके हिसाब से ये जीरो हो गया है इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में एंड इसकी वेलोसिटी J अपॉन m. सो यस इट्स स्टिल ओके. थर्ड का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ. In SHM, x is equal to a sine of omega t. The minimum time taken by the particle to reach from x is equal to ye cheese to x is equal to ye cheese is 0.5 seconds. What is the minimum time taken by the same particle to reach from x equal to plus a upon 2 to x equal to plus a? Okay, so यहाँ पे क्या है? ये जो sin omega t, yeah, it's just 1 upon square root 2 यानी कि क्या omega t is equal to 45 degrees, I guess. Yeah, okay, minimum time चाहिए रे, minimum time चाहिए. यूनिट सर्कल है अपना. सो स्टार्टिंग ऑफ एट 45 डिग्री, राइट, क्योंकि दैट्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट और ये है x इक्वल टू. सो यहाँ पे दो पोजीशंस रहने वाली है. अपने को मिनिमम टाइम चाहिए, सो इट्स गोना बी दिस, राइट? या ओके, एंड देन यू आर आल्सो गोइंग फ्रॉम प्लस a अपॉन 2 टू प्लस a, राइट? सो फॉर दैट, ठीक है ना, तो कितना तुम्हारा चेंज हुआ इन दैट केस? 60 टू 90, दैट्स 30 डिग्री. सो सेकेंड केस में 30 डिग्री है, फर्स्ट केस में कितना चेंज हुआ है? It's 90 डिग्री का चेंज हुआ. So it's gonna take one third of that time, right? So 0.5 upon 3, I guess, which is that correct or not? You want a minimum time taken by the particle to reach from a upon 2 to a, right? Of course. So a upon 2 is somewhere over here. Oh shit, it's going from 30 degree to 90 degree. That's supposed to be 60 degree का difference. And over here it's going from plus to negative a upon. अच्छा, मैंने पूरा गलत कर डाला फिर. Oh, it's yeah. So plus वाले जो दो है, that's here. So plus a upon square root 2 वाले और minus a upon 2 वाले जो दो रहेंगे. So sin कितना 30 degrees. So it's gonna be somewhere here. ऐसा ये दो. So this is the thing for minimum time, of course. So it's going from negative 30 to 45, which is 75 degree. So पहले 75 डिग्री है और सेकंड के लिए क्या है? It's going from 60 degree to 90 degree. That's 30 degree, right? Of course. Yeah. So just and 75 corresponds to this. So this is just going to be like 30 upon 75 of 0.5 basically, which is 10 upon 25. यानी कि not even 10 upon 25. Times 0.5, which is 5 upon 25. 1 upon 5, that's 0.2. So C is the answer. Next question. Fifth. Fifth is a solid metallic sphere of radius r having moment of inertia equal to I about its diameter is melted and recast into a solid disk of radius r of a uniform thickness. Same mass hai, right? Yeah. Okay, sphere of radius r, moment of inertia something, recast a solid disk of radius r and uniform thickness. The moment of inertia of the disk about an axis passing through its edge and perpendicular to its plane is also I. Then the ratio r upon r is equal to, right? तो इतना हार्ड नहीं है. डिस्क के लिए क्या है? So second case उसके लिए क्या है? It's just mr squared. मास सेम है ना, right? mr squared plus mr squared upon 2,
राइट। और पहले केस के लिए क्या है, इट्स अ सॉलिड स्पीयर, उसका आई अबाउट डायमीटर ले रहे हैं, लाइक 2/5 of mr squared, m capital R squared by the way, and these are the same, so that just means 2/5 R squared is equal to 3/2 small r squared. So अपने को चाहिए r upon r, that ratio, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, that's equal to 4/15, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, which is 2/15, so A is the answer. Next question. Next is sixth. Sixth is a uniform thin rod of mass m and length L standing on smooth horizontal surface. A slight disturbance can causes the lower end to slip on the smooth edge and rod starts falling. Velocity of center of mass of the rod at the instant when it makes angle theta equal to 37 degree with the horizontal. अच्छा, तो तुम्हें theta दिया है and you find the velocity of the center of mass, right? Oh come on, seriously. I don't like this. So it just starts to move like that, huh? क्या बोलो मैं इस पे, want to figure out the velocity. Do we really have to go for the whole balance? Yeah, बहुत घटिया है ये. I don't want to be doing this. Any other way? Energy conservation, right? That's one other way actually. Okay, तो तुम्हें थीटा दिया हुआ है, you can figure out कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया होगा. Yeah. राइट, कितना सेंटर ऑफ मास नीचे आया उसके अकॉर्डिंगली तुम अपने आप या कि बाकी जो एक नीचे आया एक ऊपर आया, राइट? यस, ओके, सो दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी का चेंज. सो mg टाइम्स कितना नीचे आया होगा, तो ये जो लेंथ दैट्स स्टिल L अपॉन टू, पहले L अपॉन टू खड़ा है, उसके बाद में L अपॉन टू ऐसा हो गया एट 37 डिग्री एंड विद द हॉरिजॉन्टल, राइट? ऑफ कोर्स जस्ट 3/5 ऑफ दिस गाय, सो इसको मैं r बोल रहा हूँ L अपॉन टू बोलने से अच्छा, सो दिस r और ये हो जाएगा 3/5 ऑफ r स्क्वायर्ड, सॉरी 3/5 ऑफ r. कितना चेंज हुआ इसमें, 2/5 r. सो ये है अपनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, दैट्स इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी व्हिच इट गेन्ड, राइट? तो ये कितने वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा वगैरह अपने को वो सब देखना पड़ेगा. डैम, नॉट नाइस यार. ओके, ये सेंटर ऑफ मास ऐसा है, इट्स एंगल थीटा व्हाटएवर, ये ऐसे जा रहा है, दिस इज r with velocity v, it's going down of course because right, okay, this is completely going in this direction and whatnot, right? Okay, with respect to center of mass it's actually like, okay, ye aisa and then it's tangential like that, and oh god, right, like this, it's v like that and that's supposed to be omega r. Yeah, I just want to figure out कि omega क्या होने वाला है. That makes it completely horizontal, right? So v तो तुम्हें ऐड करना ही है. Of course, in that case v तुम्हारा ऐसा है, omega r का कंपोनेंट लेना ना. So omega r and what is this angle? 9 minus theta, तो उसका साइन लेना पड़ेगा. Omega r cosine theta, right? So omega r cosine theta is equal to v. That should be doing it. So yeah, ये अपन कर सकते हैं. V just that, so we just want like half mv squared, so half m times iska square, omega square r squared and then cosine square theta, plus, so inertia, like, okay, half I is just mr squared upon 3, and yeah, okay, and what after that is, that should be the thing, right? Okay, and then omega squared. And what do you want? You just want velocity of center of mass, so you just want this thing, of course. So you gotta figure out कि omega क्या होगा and then you are done. Okay, cool. It's like ये क्या जाएगा, 2/5 of g is equal to r, तो कॉमन ले लोगे तुम, r omega square in fact, यहाँ पे 1/2 भी कॉमन ले लो, just got cosine square theta, m कट गया, यहाँ से r बाहर निकल चुका, omega square बाहर निकल चुका है, राइट? r कट चुका है, ये just 1/2 भी बाहर आ गया, just plus 1/3 I guess. That should be doing it. तो अपने को ओमेगा मिल जाएगा स्टेप से. Just plug in values. तो 4/5 of क्या 10, that's 8. 8 is equal to r कितना है, अच्छा आपने को बताया नहीं है. Oh god, ये सही नहीं हुआ. मे बी इस चीज को पुट कर दूंगा इसमें. अच्छा नहीं, you want in these, oh god, ये बहुत घटिया, ठीक है करना ही पड़ेगा. So 2/5 of g is equal to r omega square upon 2 and then cosine square theta क्या है, cosine square theta, that is
थीटा क्या 35 डिग्री 37 डिग्री था, सो कोसाइन क्या होगा 4.5 का स्क्वायर लाइक 16/25 प्लस 1/3 जो भी है। हाँ ये काम नहीं करेगा ना, बिकॉज ये बहुत नहीं ओके काम कर भी सकता है, who knows. Multiply by 25, right? So we got 10g is equal to r omega square upon 2 and then 16 plus 25 upon 3 whatever, right? करना ही पड़ेगा इसको. So 20g is equal to क्या होगा 48 plus 25 is 6 and okay 773 upon 3, yeah, r omega square, that's the thing. इसे अपन डायरेक्टली यूजिंग ये कर लेते हैं, वो बेटर होता है ना. जो भी अब देखो मिल गया, दैट्स थिंग. ओके ये चीज, सो दिस टाइम्स आर ओमेगा स्क्वायर ऑफ कोर्स, दैट शुड डूइंग इट. अब क्या ओमेगा को ये चीज पुट कर देते हैं, सो 73/3 टाइम्स या ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा. ओमेगा क्या है, ओमेगा इज वी अपॉन आर सी उसका स्क्वायर, सो आर टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो गया just 1 upon r like that. 73/3 cosine square is just 16/25 v square upon r like that. And that's equal to 20g of course. इसको भेज दो उधर, so 20 times क्या है ये तो यानी बस चलते जा रहा है इस टाइप से. दिस इज नॉट मेकिंग सेंस. दैट्स इक्वल टू ओके इसका टाइम्स 3 ऑफ कोर्स times 3 upon 73 and then g that's equal to v square upon r. ये तो यानी खत्म ही नहीं होगा इस टाइप से. this is 4, this thing is 105 shit. so okay और by the way इसमें r अपने को डालना है, ठीक है देख लेंगे. 48 times 2 times l upon 15 and 35 is the 365 and that times g v square is going to be 8 and then यहाँ पे आ जाएगा 16 which is 96l upon 365 and then यहाँ पे g आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट which oh wow fortunately वो है यहाँ पे, मुझे लगा कि नहीं होगा. so C is the answer. next question 7th. यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस गंदे रहते हैं, यानी कि इसमें अपन कर भी लेते पूरा आंसर मिलता नहीं है. 7th, a solid sphere is rolling purely on a rough horizontal surface, quotient friction with speed of center is u. It collides inelastically with a smooth vertical ball at a certain moment. The quotient of restitution being 1/2. ठीक है, solid sphere है, rough horizontal surface है, it collides with this ball, collides inelastically with a smooth vertical ball. Okay, quotient of restitution being 1/2. The sphere will begin pure rolling after time. Wait, what? Pure rolling? अच्छा ये सिर्फ मोमेंटम उसको तुमने ऐसे ही पार्ट किया, राइट? ओह वेट ओके यू आर सेइंग कि अब वो प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है. इंटरेस्टिंग. ठीक है, its angular velocity is just u upon r initially and yeah okay initially क्या हो रहा है, it's going like this u and रेस्टिट्यूशन का क्वेश्चन कितना है. oh and ये जो पार्टिकल रहेगा it's going like this, it's u and omega r, right? तो ये तो वैसा ही रहेगा बट दिस विल चेंज, दिस विल बिकम इतना एंड बाय द वे इसका ओमेगा चेंज नहीं होगा, इस पे कोई टॉर्क इंपल्सिव टॉर्क मतलब जनरेट तो हुआ नहीं है, राइट? क्वेश्चन मीनिंग या सो ये क्या हो जाएगा u upon 2 in that direction and then its omega is like this. okay understandable. Sphere will begin pure rolling after time how much, right? okay let's do this thing. so u upon 2 minus, well let's just say जो भी frictional acceleration है उसमें f volt also f times t, right? That's the velocity of course. and what will omega be? oh and actually we can figure out कि f कितना होने वाला है, just only like mu times g, so mu gt okay comma इसकी angular velocity कितनी हो जाएगी. so angular deceleration कितना है इसमें, it is this acceleration what, right? so force कितना है m mu g
That's the friction force. Okay, that times R was right upon the inertia. Inertia is, what's the inertia? Solid sphere, right? So just going to be 2/5 of mr squared about this point. Right. So ये हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस 5/2, या फिर एक काम करो ना, ओमेगा, या इसको उल्टा बोल दो. So it's gonna be just let's just go for उल्टा, यानी कि ये नेगेटिव ओमेगा नॉट हो जाएगा प्लस 5/2 mu g upon r. Yeah, because this actually friction is trying it to, yeah, तो ऐसा होने वाला, right? And we would want it to be going like in that direction. Of course, that's gonna make sense. And what's omega naught is just u upon r. Mm-hmm. Oh, that times t, of course. That should be the thing. Okay, so whenever b equal to omega r happens, that's the thing. Right. So u upon u upon 2 minus mu gt, that's going to be equal to r times a again, negative u plus 5/2 mu gt, right? Which means ki 7/2 mu gt, that is equal to 3/2 u. So t अपने को टाइम ही निकालना है ना, टाइम निकालना है. Yes, so it's gonna be क्या 3u upon 7 mu g, which will be what? तो अच्छा आपने को इतना ही देना था. So 3u upon 7 mu g, that's option A. Next question, 8th. Eighth is a uniform rod of mass m, length L is held horizontally by two vertical strings of equal mass as shown. क्या rod है, उसको हमने दो strings से attach. Fine. Tension on the left string immediately after it is cut will be, okay, on the left string 8. अरे right string cut कर रहे हैं क्या, ठीक है जो भी है. After the right string is cut will be, तो यहाँ का tension, right? Okay, okay, cool. So क्या करूँ मैं, क्या assumptions है इसमें कुछ, I don't know. अच्छा अगर ये टेंशन नहीं है इसमें, then what will happen is just like, yeah, ये पूरा वाला drop हो जाएगा. So there must be a tension such that, of course, that should be the thing. So ये ऊपर जाएगा, right? And tension can only act vertical, right? Of course. और ये जो है, so in that case ये जो particle रहेगा, it can, इसकी horizontal motion अपने को फर्क नहीं पड़ता, इसका vertical motion है, that must be zero. That's what it's trying to do. अपने को इसका vertical, इस point का vertical motion अपने को zero करना है. Let's do that. Suppose इसका tension T है, right? So immediately after it's cut, so इसका tension T रहने वाला है, whatever. यहाँ पे forces क्या है, यहाँ पे tension T ऐसा है, and so center of mass में, and you got mg like this thing. So T upon m minus g upwards, right? But what's the omega and हाँ, so acceleration क्या होने वाला है, angular acceleration. It's t times of r, इसको मैं r बोल रहा हूँ by the way, upon mr squared upon 3 because rod है ये, right? So this is going to be 3t upon mr, right? Okay, that's the angular acceleration, and this times r, that's going to be 3t upon m, with respect to ये चीज, ये ऐसे जा रहा होगा, so 3t upon m, मतलब कि इनको बस हमको ऐड करना है. We'll just get 4t upon m minus g, that must be equal to 0, which means that t must be mg upon 4, which is option C. Next question. 9th. 9th is a solid ball rolls down a parabolic path ABC from a height h is shown. Portion AB of the path is rough while BC is smooth. So AB rough है, then BC smooth है. How high will the ball climb in BC? Parabolic path, oh god, height h as shown, the path is rough, rolls down बोला, right? Okay, so if it's rolling down, right, friction is doing no work, so we can still apply energy conservation, except यहाँ पे angular velocity आ जाएगी सी. Okay, cool. Let's do the thing then. It's a solid ball, मतलब sphere है basically, right? Solid sphere. So मतलब कि 7/5 mr square times the angular velocity, that's the inertia,
सॉरी इसका स्क्वायर हाफ बता रहे एक्चुअली, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये पूरा रोल डाउन होने के बाद में यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है, दिस मस्ट इक्वल टू mgh, mgh, दैट मेक्स सेंस, राइट, आई गेस सो। सो ये गया which just means कि r omega, which is like, isn't that just v, so v square is equal to 10/7 of gh। अब अच्छी बात ये है कि राइट ओके अच्छी बात पता नहीं क्या है, बट द थिंग इज कि इसके बाद में इस रोटेशनल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, दैट इज इसकी सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी चेंज होगी है। सो करो v से माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, राइट, दिस इज इक्वल टू 2g capital H, that's not the thing, so capital H is just equal to 5/7 times h, that's the thing, yeah। so ये 5/7 h ऊपर जाएगा इसके बाद, so 9th का आंसर B। next question 10th is a rod of length L forming an angle theta with horizontal strikes a frictionless floor at A with center of mass velocity v0 and no angular velocity। अच्छा, rod of length L, इसका theta है, okay, strikes a frictionless floor at A with a center of mass velocity v0 and no angular velocity। करना क्या अपने को, assuming the impact at A is perfectly elastic, और ये initially moving है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर, ओह वेट, आई थिंक ऐसा बोल रहे कि ये तो पहले ये जिस ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा था, राइट, एंड देन यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, ओके ओके आई गेट इट, थोड़ी वर्डिंग अजीब है, फाइन समझ गया। ओके, assuming the impact at A to be perfectly elastic, the angular velocity of the rod immediately after the impact, right, so oh it's elastic, huh, completely, that's awesome, I guess, ठीक है, just have to conserve the energy, ओके, बहुत लंबा हो जाएगा ये, राइट, तो एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा एंड व्हाट नॉट, जस्ट टू मच, कोई इजी तरीका नहीं है करने का, वेल लग तो नहीं रहा है मुझे, यप नो इजी वे, फाइन लेट्स डू द थिंग, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट, सो यहाँ पे जो भी इसने इम्पल्स लगाया होगा, राइट, लेट अस से इसका इम्पल्स p है, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट का चेंज हो गया टू v नॉट माइनस p अपॉन m, राइट, और ये जो है इसका टॉर्क क्या होगा, सो p इन दिस डायरेक्शन, सो ये एंगल कितना है, ये एंगल इट्स थीटा एज वेल, लाइक p कोसाइन थीटा टाइम्स r, so p cosine theta r, that's the angular momentum given by this thing, right, of course। so अपने को क्या चाहिए, हाफ i omega square, it's like half i omega का square upon i, so half l squared upon i, right, तो इसका अपने को स्क्वायर करना है, half square this thing upon inertia just mr squared upon 3, so 3 upon 2 and then right 3 क्या है, p square cosine square theta upon 2m, right, this thing is what, this thing is जो एनर्जी अपन ने इम्पार्ट की थी बिकॉज ऑफ रोटेशनल एनर्जी, राइट, या, और इनिशियली इसकी रोटेशनल एनर्जी कुछ है नहीं, इट्स जीरो, कूल, दैट्स एक्चुअली वियर्ड, ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट क्या हो रहा होगा यहाँ पे, तो इसमें इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि कैसा होगा, इट्स जस्ट नेगेटिव p अपॉन m टाइम्स 2v नॉट माइनस p अपॉन m, आई गेस, एक काम करो p अपॉन m को जस्ट कॉल दिस थिंग एज v और v नॉट को अपन u बोल दिए, so then ये चीज हो जाएगी just 3 upon 2 and then you got m v square cosine square theta, right, and this whole thing is like minus v times 2u minus v, so basically v square minus 2uv, ये चेंज प्लस ये वाला, oh and by the way half m times ये सारी चीज, so right ये चेंज प्लस ये वाला चेंज 3 upon 2m times v square cosine square theta चीज, this must be equal to 0, that's when it will be elastic, I guess। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब है कि v स्क्वायर माइनस 2 ur प्लस 3v स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, विच मीन्स कि v स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2u, इट्स नॉट r, it's v, it's v over there, 2uv. नाइस, ये कैंसिल हो रहा है. ओके, सो v विल जस्ट बी 2u अपॉन 1 प्लस 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा. अपने को ढूंढना क्या है वैसे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट अपन ऑलरेडी को निकाल चुके हैं ना. या एंगुलर वेलोसिटी इज जस्ट दिस थिंग p कोसाइन थीटा टाइम्स r, सो दैट्स mv कोसाइन थीटा r, और अपने को अब v पता है, सो जस्ट पुट दैट इन देयर. और u की जगह पे v नॉट यूज कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है. सो दिस विल जस्ट बी 2 m u naught, okay, sorry, v naught upon 1 plus 3 cosine square theta, and that times cosine theta times r, right? Hopefully ye ho, right? That's, oh, we don't want the angular momentum, you want the angular velocity. Suspicious. अपने angular momentum ढूंढ लिया. Okay, that's interesting. Just divide by the inertia, right? Yeah, of course, just divide by the inertia. Inertia is just mr squared upon 3. That's right. इसको तो हम उधर देख सकते हैं, 6m v नॉट c थीटा. ओके, m तो गया यार दोनों जगह से, इसको हटा दो. ये ऊपर आके 6 हो जाएगा, इट्स v नॉट कोसाइन थीटा, ये एक r कट जाएगा. ओके, अपॉन r टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा. इज दैट करेक्ट? आई गेस इट इज. सो ये हो जाएगा 12 कोसाइन थीटा अपॉन l, and then 1 plus 3 cosine square theta. So, oh, and by the way v naught भी है, वो कैसे भूल सकता हूँ. So 12 v naught cosine theta 1 plus cosine 3 cosine square theta l. ठीक है, so b is the answer. Next question, 11th. Interesting. बहुत लंबा नहीं था ये. 11th is a cylinder is sandwiched between two planks. Okay, two constant horizontal forces F and 2F are applied on the planks as shown. The acceleration of the center of mass of cylinder and the top plank are in the ratio, assuming no slipping. Cylinder sandwiched between two planks, two constant horizontal forces F and 2F are applied on the planks. Sure. The acceleration of center of mass of the cylinder, okay, and the top planks are in ratio, assuming no slipping. What? And the top of the plank and the top plank, okay, ये plank are in the ratio, assuming. Wait, अपने को सिर्फ ratio ढूंढना है, assuming no slipping, right? Okay, interesting. करना तो अपने को पड़ेगा ही, और कोई तरीका है नहीं. सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? F upon m in this direction. ओके, और क्या आपके पास में the angular acceleration कितना होने वाला है? That will just be 2fr plus fr is like 3fr upon, और ये कितना, ये सिलेंडर है ना, राइट? mr squared upon 2, that's inertia. This times r is what you actually want, so 6f upon m, right? और टॉप चाहिए अपने को, एंड दिस इज ऑफ कोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो इट्स लाइक क्लॉकवाइज, बट तो ये ऐसा होगा फॉर टॉप, व्हिच मींस कि या सब्ट्रैक्ट, जस्ट गेट 5f upon m in this direction. So 5 is to 1, that's not here. What? This must have worked. I don't get it. ये क्यों नहीं काम कर रहा है? It must work. Oh, okay. So when you said acceleration, you didn't mean just the tangential acceleration. You mean the whole acceleration, right? तो इसकी acceleration, vertically zero है, but इसकी acceleration नहीं है, इसकी zero नहीं है. It's also in that direction. Yeah. और वो रहेगा. Okay, wait. इसका omega तो zero है ना अभी. Yeah, initially इसका omega zero है. So what is this? Why is this 2m? What? Oh, इसको मास भी दिए हुए. क्या क्वेश्चन हो गया ये तो कुछ हो गया यार. नॉट नाइस. शिट, तुमने इसको मासेस दे दिए. oh God. ये तो बहुत बुरा हो जाएगा इस टाइप से, राइट? रेशियो ऑफ दिस थिंग एंड दैट थिंग. नॉट नाइस.
the center of mass of this complete thing, yeah, that's changing and whatnot. Oh god, करो फिर इसको अलग तरह से करना पड़ेगा. This is not good. Assuming no slipping. Wow, बढ़िया. On कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ इसमें डायरेक्टली. That's 2f in that direction and this is 2f था, sorry, jf. ओके, पहले आपने 2f किया था. So without friction ये एक्सेलरेशन कितना है? Just a in that direction. Whatever, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स तो रहने वाला होगा. Yeah, fine. So इसका अपन we'll just say this is f1 and this thing is f2, right? These are forces by the way. So 2f 2f minus f1 upon, so मैं 2m की बात कर रहा हूँ. 2m के लिए एक्सेलरेशन कितना है? This thing, right, which is basically like f upon m minus f1 upon 2m. m के लिए एक्सेलरेशन कितना है? ये बहुत लंबा नहीं है. आई डोंट थिंक वी शुड बी डूइंग दिस. इसको तो अपन को स्किप करना चाहिए, राइट? या क्योंकि इसका कोई इजी तरीका तो है नहीं सॉल्व करने का. हाउ आई बीन गोइंग टू डू दिस थिंग? There's no way. There's just no way. Yeah, कोई भी तरीका नहीं है करने का, you know. Yep, no way. Oh God, कुछ तो होगा. क्या आपको एक्चुअली करना चाहिए? I don't know. Just do it. ये एग्जाम नहीं है जब मैं इसको स्किप करूँ. चलो, m क्या है? सॉरी, इस पे फोर्स, इस पे क्या एक्सेलरेशन हो रहा है? f upon m, राइट? ओके, और इस पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? सो हाउ डू यू फिगर आउट अल्फा? फिर अल्फा आर की बात करते हैं पहले तो, राइट? व्हाट्स दैट गोइंग टू बी? सो f1 ऐसा है and f2 ऐसा है, राइट? सो लाइक f1 plus f2 times r, and yeah, by the way, it's just, oh shit, it's not this thing, it's f upon m minus f2 upon m. That should be the thing, right? Yeah. और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है? f1 plus f2 times r, that is, you know, okay, that's the torque upon the inertia, so it's got mr squared upon 2. Okay, cool. That times r, so r squared ये cancel हो जाएगा. Just got this thing 2 times f1 plus f2 upon m. Right. So alpha r is just this guy, 2f1 upon m plus 2f2 upon m. Okay. Center of mass का, so alpha r basically. Center of mass का एक्सेलरेशन कितना है? So मैं a बोल रहा हूँ. That's going to be, तो f1 इस डायरेक्शन में, f2 ऐसा, like f1 minus f2 upon m. राइट, सो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी. इट्स इन दिस डायरेक्शन, ये जो है इट्स गोइंग लाइक दिस. ओके, ये 2m का है इन दिस डायरेक्शन और f, ओके, इसका है इन दिस डायरेक्शन. लेट्स डू द थिंग. सो a minus alpha r. ओके, तो a ऐसा है इट्स गोइंग लाइक दैट, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स माइनस अल्फा r फॉर द टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ऐसे जा रहा है एंड देन, या राइट, सो a minus alpha r, दिस थिंग, आई गेस, right? A minus alpha r in that direction, और इसका अपने को उल्टा करना है. So I would say minus a plus alpha r actually. So ये हो जाएगा f2 upon m minus f1 upon m, and then ये plus करना है, so 2 times of that, 2 times of that. Okay, this is going to be 3 f2 upon m and then plus f1 upon m. That must be equal to ये चीज, so f upon m minus f1 upon 2m, right? I guess so, which just means like 3f2 plus 3 upon 2f1 is equal to capital F. Yeah, I guess. Which means कि f2f2 plus f1 is equal to, to multiply किया 2f हो गया यहाँ पे 3 से divide किया 2f upon 3. That's the thing. That's the first equation. अपने को पूरा solve करना पड़ेगा system and then finally we get the thing. Yeah, you can understand मैंने ये Q skip करने की कोशिश की थी, but whatever. And then जो दूसरा रहने वाला है, so दूसरे का मास कैसे जा रहा है? इट्स शिट, ओह शिट, अल्फा इज इन दैट डायरेक्शन.
पागल हो रहा होगा। दिस वाज सपोज बी नेगेटिव। ठीक है, बहुत घटिया। व्हाट्स a minus alpha r? पागलपन है यार। सो माइनस ऑफ दिस गाय, ये पागलपन नहीं है, राइट? वाई वुड यू वन डू दिस थिंग? एक काम करो, हर एक को m से मल्टीप्लाई कर डालो, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस। और तुम्हें चाहिए क्या है? एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास, राइट? ओके, वी कैन फिगर दैट आउट लेटर। पहले से ओके नहीं, भूल जाओ ये सब, ये करने की मुझे इच्छा ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज ये कुछ के कुछ है, राइट? अपन सारे जो राइट वर्ड वेलोसिटी से अपन वही लेंगे इनफैक्ट, राइट? ओके, सो ये राइट में कितना होगा? f/2m माइनस f/m, दैट्स इन द राइट डायरेक्शन। और ये राइट में है, एंड देन ये भी अपने को राइट में चाहिए, सो इट्स गोइंग लाइक दैट एक्चुअली, राइट? सो टॉप के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए ए इस डायरेक्शन में, अल्फा ऐसे जा रहा है, सो इट्स a माइनस अल्फा r, राइट? सो ये माइनस करना है अपने को, माइनस f/m। बॉटम के लिए a प्लस अल्फा r, बट you know, okay, a ऐसे जा रहा है, and alpha is like this, right? It's clockwise, so yes, a plus alpha r in that direction. इसको बस आपको ऐड करना है 3f1/m प्लस f2/m, इट्स इन दैट डायरेक्शन। मैच मैच करो, टॉप पे क्या है? m है, सो इसको मैच कर देंगे, right? Which means that f minus f2 is just equal to negative f1 negative 3f2। you can see इसको मुझे क्यों करने की इच्छा नहीं थी, right? Okay, ये हो जाएगा 2f2 प्लस f1, और ये कितना लंबा है, प्लस f इज इक्वल टू 0। और बढ़िया, ये भी काम नहीं करेगा। सो ये तो ओके, ये उल्टे हैं इनफैक्ट, वाओ। और बॉटम को करो मैच, सो ये और ये, राइट? फ्रॉम दैट व्हाट you get 3f1 plus f2 is equal to f1/2 minus capital F। 6f1 plus f2 is equal to f1 shit minus 2f। तुम बताओ, तुम करते अगर तुम क्वेश्चन एग्जाम में होते, तुम ये करते? आई डोंट थिंक सो। subtract कर देता है, like 4f1 plus f is equal to 0, so f1 is just negative upon 4, at least अपने को ये तो पता है। what about f2? इसमें पुट कर दो, so 2f2 is just equal to negative f1, which is like plus f/4, it's going to be negative 3/4 of f, so f2 is just negative 3/8 of f। most likely जो पूरा कर रहा है वो गलत भी रहने वाला है, because yeah it's pointless doing this, but चलो ठीक है, no big deal। and then we just want ये चीज, यानी कि f1 minus f2/m, सब्ट्रैक्ट करो इनको, right? It's like 3/8 minus 1/4 times f, and this thing upon m of course। और टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए अपन क्या करने वाले थे, ये चीज, सो माइनस f1 माइनस 3f2/m, माइनस ऑफ f1 प्लस, हाँ ठीक है, तो वो दोनों निगेटिव है, नो बिग डील। 3/8 plus 1/4 times f/m, इट इज 2/8, isn't it? ये पूरा का पूरा सिर्फ 1/8 हो जाएगा, and this will become 5/8। so in the end it's ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। okay fine, just move on, yeah it's still not working, just move on, there's no point in this। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होने वाली है, there's actually no point in doing this। 11th just अपन मिस कर रहा है, 12th और ये तुम टाइम पे कर ही नहीं सकते, there's no way। A hoop of radius r and mass m is rolling without slipping with velocity v towards a step
हाइट। इस टाइप से मेरा टाइम पूरा बर्बाद हो गया, काउंट नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट नो, ठीक है, एटलीस्ट वी शुड स्टॉप। सो या फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।